So hello and welcome back everybody. Today we are solving day 16. I guess day 16. Yeah, this is day 16 of our 30 days of JavaScript. Wait, let me check if this is day 16 or day 15. यार मैं खुद काउंटिंग भूल गया. Sorry guys. Um, okay, so this is day. Okay, this is day 16 actually. Okay, I was right. Day 16 here. And today we have the question of cache with time limit and the question is we have to like पहली बात तो यहाँ पे ना मतलब कैशे यूज करना है. ठीक है. सो अगर कैशे की बात की जाए कि कैशे क्या करता है तो कैसे तो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए अगर आप कोई छोटी सी वैल्यू स्टोर कर रहे हो ना जैसे कि आपको बार बार वैल्यू लेनी नहीं पड़ रही आपकी एक वैल्यू इन्फॉर्मेशन एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो रहा है दैट इज नोन एज कैशे. So we have to write a like class that allow getting and setting key value pair. However, a time until expiration is associated with each key. तो आपको एक एक्सपायरेशन टाइम दिया होगा जिस टाइम पे वो की जो है वो एक्सपायर हो जाएगी. जैसे ही की एक्सपायर होती है आपको क्या करना है फिर वो वैल्यू को आपको कह सकते हो फिर अभी आगे देखते हैं कि उसको मेरे ख्याल से रिटर्न नहीं करना. ठीक है. द क्लास हैज थ्री पब्लिक मेथड. पहले तो तीन पब्लिक मेथड है. ठीक है. सेट की वैल्यू ड्यूरेशन. अब इसमें जो हमारा सेट है ना वो क्या एक्सेप्ट करता है वो एक इंटीजर एक्सेप्ट करता है जो कि की है हमारी फिर एक वैल्यू फिर ड्यूरेशन कि कितने ड्यूरेशन तक इस की को वैलिड रखना है. ठीक है. अब क्या होता है ड्यूरेशन जैसे ही पास हो जाता है की एक्सेसिबल नहीं होगी दैट मीन्स कि क्या होगा कि की एक्सपायर होगी तो उसको हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे. अदरवाइज अगर वो सेम की है तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो हम ट्रू देंगे नहीं एग्जिस्ट कर रही तो फॉल्स देंगे. और बात रही गेट की इफ एन अनएक्सपायर्ड की एग्जिस्ट इट शुड रिटर्न द एसोसिएटेड वैल्यू अदरवाइज इट शुड रिटर्न -1. अगर कोई की है तो वो आपको वैल्यू देनी चाहिए अदरवाइज -1 देगी. काउंट क्या रिटर्न करेगा काउंट हमें रिटर्न करेगा अनएक्सपायर्ड कीज जितनी अनएक्सपायर्ड की होंगी वो हमें काउंट रिटर्न करेगा. ठीक है. तो पहले एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पे हमारा ये एक्शन दिया हुआ है कि यहाँ पे हमें एक्शन क्या परफॉर्म करना है. एक्शन के अंदर 5 एरर दिया है. यहाँ पे फिर वैल्यूज दी हुई है फिर टाइम डिले दिया हुआ है. तो पहला हमारा नल आ रहा है देन फॉल्स आ रहा है देन 42 आ रहा है देन यहाँ पे 1 देन यहाँ पे -1. ठीक है. तो इस तरीके से अगर यहाँ की एक्सप्लेनेशन देखा जाए तो T0 पे कैशे जो हमारा वो कंस्ट्रक्ट हो गया. ठीक है. T अगेन 0 पे जो हमारा की वैल्यू पेयर है वो क्या बन गया 142 इज एडेड विद अ टाइम लिमिट ऑफ 100 ms. ठीक है. एंड तुम्हारे जो यहाँ पे द वैल्यू डजंट एग्जिस्ट सो फॉल्स इज रिटर्न. अब वापस से क्या हो रहा है कि T50 पे ठीक है जब टाइम हमारा 50 हो रहा है तो की क्या मिल रही है उसे 1 मिल रही है. ठीक है. एंड द वैल्यू ऑफ 42 इज रिटर्न. तो इस टाइम पे वैल्यू क्या रिटर्न हो रही है 42 रिटर्न हो रही है हमारी क्योंकि 1 का अगर आप की देखो तो 1 की हमारी यहाँ पे क्या हुई थी 40 की वैल्यू क्या थी 42 ही थी ना. तो यहाँ पे हमने वो किया. अब अगेन क्या हो रहा है T50 पे काउंट कर रहा है कॉल तो एक ही एक्टिव की हमारे पास यहाँ पे जो कि 142 है. तो वो हो रहा है अगेन 100 मिलीसेकंड पे हमने कॉल किया की 1 एक्सपायर्स. ठीक है. अब क्या हो रहा है कि तुम्हारा यहाँ पे जो की 1 है. ठीक है. अगर आप की 1 पे ध्यान दो तो 100 ms तक के लिए ही ये जो थी स्टोर कर रहे थे. अब 100 ms एक्सीड हो गया तो की 1 जो है हमारी एक्सपायर हो गई. अब अगेन अगर 150 टाइम पे देखा जाए एट 150 यहाँ पे देखा जाए. ठीक है. तो गेट कर रहे हैं हम Q1 को तो बट वो तो है ही नहीं क्योंकि वो एक्सपायर हो गई है. तो कैशेस हमारा जो है एम्प्टी हो चुका है. सेम इसी तरीके से हमारा जो दूसरा एग्जांपल है वो भी है. तो एक काम करते हैं इम्प्लीमेंटेशन से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. इट विल बी मोर इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड इट थ्रू इम्प्लीमेंटेशन. सो फर्स्ट हम क्या करेंगे विल मेक अ की वैल्यू पेयर स्टोर. सो हम यहाँ पे दिस विल यूज दिस डॉट कैशे ताकि हम कैशे को बाहर भी रेफर कर सके इक्वल टू न्यू डॉट न्यू मैप. ओके. हम यहाँ पे हमने एक नया की वैल्यू पेयर बना लिया. नाउ अब एक काम करेंगे हम ना यहाँ पे जो हमारा फंक्शन दिया है टाइम लिमिट कैशे मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि पूरा फंक्शन दिखे. अब ये प्रोटोटाइप डॉट सेट है. अब सेट हमें ऑलरेडी इतना फंक्शन लिख के दिया हुआ है. सेट करना क्या है सेट क्या कर रहा है देखो. सेट एक इंटीजर एक्सेप्ट कर रहा है की एक्सेप्ट कर रहा है वैल्यू देन ड्यूरेशन. ओके. अब की वैल्यू ड्यूरेशन जो कि की वैल्यू ड्यूरेशन तीन चीज एक्सेप्ट कर रहा है हमारा यहाँ पे जो सेट है. और
ड्यूरेशन जैसे ही हमारा elapse हो जा रहा है, द की शुड बी inaccessible, की एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए. This method should return true if same unexpired key already exists, false otherwise both the value of duration should be overwritten. तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसके अंदर हमें तीन जो वैल्यूज है वो मिल रही है, ठीक है. तो की मिल रही है, एक काम करते हैं यहाँ पे ना सॉरी, सेट है यहाँ पे की वैल्यू ड्यूरेशन मिल रहा है. तो हमें क्या करना है कि पहले तो कह सकते हो, चलो मान लो यहाँ पे हमने कॉन्स्ट अभी का करंट जो डेट है वो लेंगे, ठीक है. अभी करंट जो हमारा डेट टाइम है वो क्या हो रहा है, ठीक है. डेट डॉट नाउ हमने ले लिया. अब ये करंट टाइम हमारा मिली सेकेंड्स में रिटर्न करेगा, ठीक है. इट विल रिटर्न द टाइम इन मिली सेकेंड. अब हमें क्या करना है कि मान लो कॉन्स्ट हमारा एक्सपायर जो भी होगा, कितने टाइम में एक्सपायर होगा, ठीक है, हमें वो कैलकुलेट करना है. अब वो हमें नाउ प्लस नाउ प्लस ड्यूरेशन टाइम में, जो हमारा ड्यूरेशन हमें प्रॉप से मिल रहा है उस उतने मतलब ये हमारा करंट टाइम है. कितने टाइम बाद की एक्सपायर होगी, इतने टाइम बाद टी हमारी जो की है वो एक्सपायर हो जाएगी. द की विल बी एक्सपायरिंग आफ्टर दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम. नाउ व्हाट वी हैव टू चेक, now we have to check whether if this dot cache, okay, we are referring this cache with the help of this, okay, dot has. Now has is a keyword which will check if the key is existing or not. So it will check if the key is there. So what we have to do if the key is there, so we will do simply const entry is equal to this dot cache dot get key. So we will get the value of the whatever the key is there, okay, and the expire time we will also get the expire time. तो एक बार expire time भी ले लेते हैं कि यहाँ पे हमारी जो expired है time वो क्या है. तो कह सकते हो const सॉरी, सो हमें की के अंदर entry dot value, what is the value, जो हमारी value है वो क्या होगी, that will be value, ठीक है. सो हमें यहाँ पे की हमारी जो की वैल्यू है वो मिल गई. अब एक्सपायरेशन टाइम भी ले लेते हैं. एंट्री डॉट एक्सपायर, क्या होगा एंट्री डॉट एक्सपायर, दैट विल बी द दिस एक्सपायर, ओके. ये जो एक्सपायर है ये होगा, सॉरी यहाँ पे वैल्यू होगा, ओके. सो द ये हमें एंट्री टाइम, वैल्यू एंड एक्सपायर टाइम मिल गया. वी हैव गॉट ऑल द थ्री वैल्यूज ओवर हियर. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अगर जो हमारी ट्रू है, इफ द ट्रू रिटर्न मतलब की ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, ट्रू रिटर्न कर रही है, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिटर्न ट्रू, ओके, रिटर्न ट्रू. हमने उसकी कॉपी बना ली एंड हमने ट्रू रिटर्न कर दिया. बट लेट्स जस्ट से अगर हमें जो की है दैट इज नॉट एग्जिस्टिंग, ओके, की एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो हमें एक नया एंट्री बनाना है इन आवर कैशे. सो विल मेक अ न्यू एंट्री, दिस डॉट कैशे dot key, sorry, this dot cache dot set. Now we have to set again. What do we have to set? Simply पहले तो key set करेंगे, comma. Now we have to set the value, और वैल्यू को एज अ वैल्यू ही हम यहाँ पे स्टोर कर दे रहे हैं. अपने रेफरेंस के लिए हम ऑब्जेक्ट को रेफर करके यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं. एंड व्हाट वी हैव टू स्टोर वन मोर थिंग, दैट इज द एक्सपायर टाइम. तो एक्सपायर का कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारा एक्सपायर है, हमने इसको एक्सपायर ही नाम दिया है, तो वी कैन सिंपली यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पे इसको एक्सपायर टाइम कर लो, इफ यू गाइस डोंट वांट गेट कंफ्यूज्ड, सो इट विल बी मोर इजी फॉर द रेफरेंस. सो एक्सपायर टाइम, एंड यहाँ पे भी हम एक काम करेंगे, एक्सपायर टाइम कर देंगे, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हमारी जो वैल्यू है वो नहीं है तो स्टोर हो जाएगी. दिस विल बी getting this will be making a new key value pair if the value is not there, and it will be returning false as per the first method. Now there is another function. अब हमारा जो function uh, that is get. So what get has to do, if unexpired key exists is to return the associated value, otherwise minus one. Very simple.
Nothing to do here. What we have to do, if now we'll check again, we'll get, first of all we'll get the current date, we'll get it over here. Okay, now what we'll check, if, okay, if this dot cache dot has key, if it has the key, first of all we'll check if it has the key, then what we have to return. Okay, we simply would return const entry is equal to this dot cache dot get, and then what to get, where do we get the value, like we'll get this inside this key, whatever the key which we are getting. Now if entry dot expire, okay, if entry dot expire time, this is the expire time, if entry dot expire time is less than now, so in that case what we have to return, according to the question, in that case we have to return, okay, this dot cache dot delete key. Now we will, what we'll do, we'll remove the key because it is expired, so we'll remove it and return -1. But let's just say if it is not expired, then what we'll do in that case, we'll do nothing, we'll simply return the entry dot value, whatever the value is there inside our whatever is the value of that key. Now there is one more thing, let's just say if this doesn't have any key, like this dot cache has key, if it doesn't has key, what we'll do, then also in that case also we will simply return -1. Okay, and now we have one more, that is our count function. We have to return the count of the um, keys which are active. So again we have to get the current date, first of all, that is important. And now let's say count is equal to 0, let count equal to 0. Okay, so for now we'll say over here we'll make a for loop over here, and for entry, okay, again if we have of this dot cache dot value, okay, and this, from this we'll get all the value inside the cache whichever is there, and we'll make a loop and we'll check if entry dot we have this expire time over here, if entry dot expire time is greater than equal to now, either it is greater than or equal to now, we'll return count plus plus, and we will simply return the count over here. So this is what all the three functions are doing. I'll again explain it once, but let's try running it if it works or not. Then if it doesn't work, we'll look what is going wrong and let's see what is the difference. Null null false 0 and 42. So it is giving us wrong answer in the case of what cases? Um, these were count and get again. So for the count, it is giving us 0 again. Let's see where we have we have initialized this, and over here we have taken date as new date, then expiration time we have taken now plus duration that will be working, and now we have this if cache has key. Okay, we'll check key whether it has the key or not, then we'll give the we'll have store all the value over here, and after storing the value we are taking out the value, we are taking out the expiration time, and we are returning
true simply. So that works. And else, if there is like a new entry, for the new entry we are setting the values. We are getting the key over here, and for the value we are storing the value for the value over here. And again, expired time. So this, I guess we have to refer this as expired time itself. I guess it is not taking the reference, I guess, because we have to give the same name. Let's try to run this. I guess this was the mistake. We have to give the same name reference. Okay, first one has run. Second one is again giving us some issue. It should be -1 on the get, and it is giving us 50. We already have time limit cache output as null. Set we have false, it was not set. And again set it, I have got true. Then get we have got minus, okay, 50. Then again get we have got it. But the thing is ki the time limit has been exceeded. So time limit has been exceeded, but it didn't got false. So let's check our second function. We have the date as new date. Then we have this dot cache dot keys. Now we are checking if um okay. So here we have the get, and if we are checking the cache has the key, then entry will be this dot cache dot get key, and entry expiration time will be greater less than um now. And this dot we will have to delete the key. If the key has expired, then we'll return -1. This is fine, I guess. Then again after that, if we have an else, then we'll return entry dot value. So this covers up this loop. And for the outer loop we have this over here. Now let's try check for the count. We have function in millisecond, then we have date dot now. And for the count also it is working fine over here. I guess there is some issue in this function. I'm not getting it what it is, but we'll try to fix it. um if no key was found. Okay, so we have this key over here, and we are checking if the time has expired or not. Enter dot expiration time. Then we are returning the deleted. We are deleting the key, and we are returning -1. So this should work fine. I mean, as has the key, but the time is expired, it should return -1, but it is instead returning us. Okay, it is returning 50 over here, but it is returning -1 over here because time has obviously I'm not sure, but is this right? Because uh expected is 50. I don't think we should get 50 over here. We have this, then we are setting this. Okay, so we have only time cache. Time delay we are getting one. Get. So this is okay. We have already got it. So this is one over here. The thing is the time over here is not getting set it properly. So I think the issue is in this.
We are not setting the time properly over here. We need to set the time properly. Okay. I see the issue. We are not setting the expired time over here properly. Actually, the thing is where this should be expired time itself. The reference was getting wrong, and that's why it was not taking the. Okay, so now the test cases have been passed. Let's try submitting this. And it is taking a bit of time, but the question has been submitted and it beats 88.44% of the total solutions. So this was the solution for today's question. I hope you have understood it. Again, I'll give you a brief just introverted what I've done. Like we have initialized the cache first over here, then we have the three function. First the get was there. Here we have got the date, current date. If it has the key, then we are checking whether the time is expired or not. If the time is expired, we are deleting the key and returning -1. Either we are returning the value, or if key is not there, then return -1. Simple. In the count function, we are simply getting the date, then we are getting the count, and we are checking if the expire time is equal to now or greater than now. Then we are returning the count, and the count is being returned over here. And over here in the set, what we are doing, we are getting the date dot now, current date. We are getting the expire time, and after that, we are getting this dot cache. If it has the key, then we are getting the values and we are storing the values over here, and then we are returning true. If it doesn't have the value, then we are making a new key, and for the new key we are storing the value and we are returning false. So this is how we are doing it. So that's it for today's video, and I think it was bit, yes, it was difficult. It was a bit difficult, but not that difficult. If you'll go through it, you will understand how to solve it. So guys, this was it for today's video. Make sure to like, share and subscribe the channel, and भाई जल्दी से अपने दोस्तों को भी share कर दो who are on their journey for the lead code quest. So we'll see you in the next video. Till then, tata, bye bye, take care.